welcome back to our channel. Welcome back. So guys, today we are going to be going to do a bit of Ramadan shopping because apparently Ramadan is tomorrow, but it's not confirmed. But just in case, we're going to be doing shopping today and prepare ourselves. I'm really excited. Mum is really excited. He's really excited as well. He's a bit sick. He's a bit sick. He felt sick this morning. He feels a lot better now. But yeah, that's why he looks a bit down. एकदम हो गई है एकदम सर्दी पड़ने लग गई कल स्नो पड़नी है तो बच्चे फिर सिक हो गए गर्मी सर्दी इससे इंसान सिक हो जाता इसलिए थोड़ा बच्चों को स्नीजिंग वगैरह हो गई क्योंकि कोल्ड कल हमारे फिर स्नो पड़नी है तो इस वजह से I think it's false. हाँ जी Because the weather always has to lie. Why? It's false. Yeah, guys, and it's also raining today, which we thought because this morning it was like a dry weather, but then it started raining, guys. So और कल हमारे सारा बाजार ओपन हो जाने शॉपिंग्स ओपन हो जानी है बस आप एहतियात से चलो अभी जिनको वैक्सीन लगी है वो तो ठीक है बाजार जाएं जिनको वैक्सीन नहीं लगी वो मत जाएं अपने पेरेंट्स को मत निकालें बाहर हाँ जो 20 है 17 18 इन लोगों को इम्यून सिस्टम इनके स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर भी अगर कोल्ड चीज़ें खाएंगे तो फिर इम्यून सिस्टम भी काम नहीं करता आप लोग एहतियात करो एकदम बाजार खुले तो सारे ऐसे ना जाना जिस तरह सेलें लगी चलो भागो शॉपिंग करो शॉपिंग तो यहीं रहनी है आहिस्ता कर लो रमज़ान की और थोड़ी कर लो. Shops are going to be opening tomorrow, guys. So me and Mum are going to be doing shopping vlog tomorrow as well. We're going to be doing a lot of shopping because we haven't done it in a while. Obviously, Manahil, she's got work, so she won't be coming with us, which is really sad. But it will be me and Mum. Me, Mum and Aliza. So we're going to be doing shopping tomorrow, which is going to be really exciting, and we're going to be taking you guys along with us as well. कोशिश करेंगे मनाहिल भी चले. But why not me? हाँ तुम भी चलो मनाहिल को मैं मनाहिल के बगैर शॉपिंग नहीं करती क्योंकि मेरी बड़ी बेटी है मुझे अच्छा लगता है कि वो मेरे साथ But Mum has me, so Mum doesn't need to worry. नहीं अलीशा भी अब बड़ी हो गई अलीशा ने अब जॉब स्टार्ट करनी है. Yes, guys. So right now they are signing me a contract, and then I'm going to be doing a vlog on that, on my new job, and then I'm going to be starting my YouTube channel. So as soon as I start my job, I'm going to be making videos how it's the building. Yes, everything. So guys, it's going to be really exciting. So you have so many videos coming up, and you guys are going to be really excited. So yeah, guys. अलीशा को दुआएं दे कि अल्लाह मियां से तरक्की दे ये प्रिंटरशिप पे जा रही है अपना ये लेटिंग जो प्रॉपर्टी की होती है तो इसमें जाएगी इंशाल्लाह माँ बाप की दुआएं आप लोगों की दुआएं साथ हैं तो बच्चे हमेशा तरक्की करेंगे अपने पेरेंट्स की दुआएं लो और सारी ज़िंदगी तरक्की करो. मनाहिल मेरी बेटी बहुत अच्छी है ड्राइविंग करती है इसने बहुत हमें आराम दी है मैं कहती हूँ ऐसी बेटियाँ रब को दे सबको. So guys, this is the weather right now. It's currently not raining, but it's kind of raining. There's Aliza. Aliza? मनाहिल अब ड्राइविंग कर रही है उसको मैं चेंज नहीं करना चाहती. अलीज़ा मेरी बेटी अभी थोड़ा पढ़ेगी. अलीज़ा ने अभी ईयर 9 में होना है अभी साल. अलीज़ा बेबी है अभी मेरी बेबी है. There's Fee. Look at this cute boy. छोटा वो मेरा काका है. तो मैं ये कह रही थी कि लिशबा की अब प्रिंटरशिप स्टार्ट हो जाएगी. लिशबा के लिए प्लीज़ आप लोग दुआ करें मेरी बेटी के नेक नसीब करे जॉब उसको रास आए और वो हमेशा इसी तरह ही उसको अच्छे काम मिलते रहें मेरी बेटी को. तो रमज़ान शुरू हो रहा है रमज़ान में अल्लाह ताला ने इसकी जॉब का काम कर दिया बहुत अच्छा किया. अल्लाह ताला ने माँ बाप की दुआओं की बदौलत आप लोगों की दुआओं की बदौलत सब की बदौलत अलिशबा को एक अच्छी कंपनी में प्रिंटरशिप मिल गई और वो स्टार्ट करेगी. इसको शौक भी है प्रॉपर्टी का तो ये प्रॉपर्टी का काम करेगी. अब चलो मेरी जॉब अभी नहीं स्टार्ट हुई मेरे एयरपोर्ट की जॉब अभी पता नहीं कब स्टार्ट होती है. बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट तो बंद ही हैं पता नहीं कब खुलेंगे ये अल्लाह ही जानता है. बहुत साल हो गया हम लोग घर बैठे हुए हैं बस
एयरपोर्ट है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ, तो आप लोग दुआ करें कि एयरपोर्ट भी खुल जाए, मैं भी अपने काम पर दोबारा चली जाऊं और सारी फैमिली अपने अपने कामों में मसरूफ हो जाए। Oh look, this is my building. या अलिशबा की वो बिल्डिंग है, वो देखे सामने ब्राउन, जिसमें काम करेगी। करीब ही है घर के। सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि घर के करीब है। अब टेस्को आ गया, हम रमज़ान की शॉपिंग करेंगे। वो देखे टेस्को, कल बाजार ओपन हो जाएगा। ये देखे टेस्को, मैं ही नजर आ रही हूँ। टेस्को कितना हो गया वो लड़का फैसलाबाद। मेरी बेटी मनाहिर, मेरी लड़कों की तरह मेरी बेटियां हैं। इतना आराम लड़के नहीं देते जितना लड़कियां देती हैं, इसलिए दुआ किया करो रब तुम्हें लड़कियां ही दे। माँ ये क्या Leviosa, more like Leviosa. watermelon. This is rose water. ये ले चलो। आज हम रमज़ान की शॉपिंग करने आए हैं। मैं बच्चों को भी साथ ले आई हूँ। ये देखो। Hello everyone, I'm wearing something completely different today. It's all creased up. Hey, this is my outfit, guys. Careful. Okay, guys. So right now we're going to be going to the food section. Oh no, we're going to be going to the clothing section, and we're going to see what's in there. We might get something, and then yeah, guys, we're going to show it to you. So guys, right now we're looking at jewelries. हाँ, मैं ज़रा घर पहनने के लिए थोड़े से देख रही। जब मैं बाहर जाती हूँ गोल्ड नहीं पहन सकते ना। Oh, these aren't sale. I don't know. Check the price. Alishma, what about this? मिलान ला के हाथ। Oh, these look nice accessories. कितने? Huh? Can you buy this? दीदी ये क्या है? This looks like. Help, Alishma, what is this? This is like a bangle. नहीं। Let me see. This is something else. Let me see. This is a bangle, guys. Bangle. Yes. Yes. Look, wait. So we are in Tesco's and we are shopping for clothes. Why? I don't know. Listen. Why? Why do I keep forgetting? Okay, bye. But yeah. These are all the clothes that we have. I don't know if Mum wants some, but we're looking for I don't want everyone. to say anything embarrassing or anything, but Do you know baby? okay. So we are by the vitamin section. And Mum is And earring shopping. I actually like the mask I'm wearing today. Oh, I'm just gonna fall. Holy shit! So guys, we're gonna be getting the medicine for Fee, and Dibby's right there, and there's Mum. This is what we got so far, guys. अभी तो कुछ नहीं लिया इतना पास। रमजान का लेना अभी। Yes, we're gonna be getting a lot of food. And there's me. Yes, Mum? तेरे पापा भी लेकर आए। Huh. बड़ा मास्क लगा। No, Ma, you look so nice. That's it, guys. ये इतनी थैंक यू। Well, they look ugly. मेरी ग्लासेस टूट गई है। Yeah, so Mom's gonna get replacements soon. Yeah. Now we're in the food section. Mum and Nahil are going to be getting some food. We did a lot of shopping actually, and a lot of food shopping to be honest. Let me show you guys what we got. So this is what we got so far. There's Mummy. There's Nahil. Oh, okay. Mum's getting egg. एग लेके जा रही हूँ बिरयानी में। एग प्रोटीन। So guys, this is all the shopping that we've done so far. So we're in the food section right now. And that's it, guys. I'm not gonna lie, that it's a lot crowded today. There was a lot of rush as well.
Maybe because it's Sunday, I don't know, but it was really crowded. But yeah, tomorrow the shops are going to be open. I'm really excited. Okay, so we are heading to the checkout. Look at Fee. Look at Elise. Yo, what's up? Elise, Ma, that's clearance. Why would you want to do that? Didi, I feel so loose, man. My hair's puffy as always. I straightened it yesterday. I think it's because of the cam, you know. Huh? Where is that, Mummy? Guys, so we're in the car now. So sorry for the lighting, it's really bad, I know. So we're gonna be going home now. We showed you the shopping that we've done. We've done a lot of food shopping, obviously because of Ramadan. Even though it's not confirmed, we still did it just in case. There's Fee, he's got his chili chicken, and there's Mummy. Hi, assalamu alaikum. And then that's it, guys. So yeah. अभी खबर आई कि फैसलाबाद हमारे गांव में किसी यंग लड़के को कोरोना हुआ और उसकी डेथ हो गई। पाकिस्तान में तो अब कोरोना आया, हमारे यूके में तो 6 मंथ हो गए। रोजाना इतनी डेथ होती है कोई हद ही नहीं। लेकिन लुक आफ्टर करो, मैं तो हमेशा यही कहती हूँ केयरफुली से चलो, बाहर ना निकलो। पाकिस्तान में कोई लुक आफ्टर नहीं करते अपने। मास्क पहनो, अंदर ही रहो, गैर जरूरी बाहर ना निकलो। क्यों मलीशा? Totally right, guys. Honestly, you should be going outside because I got sick. Okay, everyone. So we have reached home. We have reached home, and Mum is sat down as well. We have unpacked everything. We have done all the shopping, and yeah, that's it. I hope you guys enjoyed this short vlog. So please. Yes, it's expected to snow tomorrow as well. The weather's quite unpredictable. Sometimes it's sunny, sometimes it snows. Anyways, I hope you guys enjoyed this vlog. It's very short. And please do give it a thumbs up, like, share and subscribe. Subscribe, guys. Happy Ramadan. Hi Ramzan Mubarak to everyone. I think it may be tomorrow. It may be 2 days later. But yes, please do like, share and subscribe. Subscribe, guys. Love yous.